Assalamu alaikum. This is I welcome you in another lecture of energy resource and utilization. As I mentioned earlier, this series of lecture will comprise of the different energy sources, and in this today's lecture we will be discussing hydropower. So hydropower, this is the code, this is an outline of the lecture. Resources, type of hydropower system, some facts and figures, large scale versus small scale, high head versus low head, energy conversion technology, sustainability issues, environmental and societal impact, and economic issues. So these are some of the links which which are really helpful, which you could use for your references and for your future citations. So first of all, let's first discuss about types of hydropower system. There are three basic types of hydropower system. One is called impoundment, which involves dam. The other is diversion or run of river systems, and the third one is pump storage. जो पहला वाला जो कैटेगरी है वो आमतौर पर मिसाल के तौर पर आपके यहाँ जो तरबेला डैम या मंगला डैम है जिसमें आप एक बड़ा टैंक बनाते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ी लेक या झील होती है जो जिसमें पानी को आप स्टोर करते हैं एंड देन यू ओपन द गेट्स टू रन थ्रू टर्बाइन टू प्रोड्यूस एनर्जी पावर। अगली चीज़ जो है वो आपके पास डाइवर्जन और रन ऑफ रिवर सिस्टम होते हैं जिसमें आपके पास जो दरिया बहता दरिया है उस पर आप छोटे डैम बनाते हैं और फिर वो बिजली पैदा करते हैं। पम्प स्टोरेज जो है वो दूसरा एक और कैटेगरी है जिसमें टू वे फ्लो पम्प अप टू अ स्टोरेज रिजर्वायर एंड रिटर्न टू लोअर एलिवेशन फॉर पावर जनरेशन। आप यूजुअली पंप करते हैं पावर को किसी हाइट के ऊपर जाके वहाँ स्टोर करते हैं देन यू रन देम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। So there are three different types, and depending upon the location and the source of water type, you install these power systems. So this is a schematic of a conventional hydropower installation. We have transmission line which connect the power plant or the hydropower plant to the station. We have dam stores water and penstocks carries water to the turbine. Penstock basically वो चैनल होता है जिससे पानी जो है वो बहता है और आपकी टरबाइन पे हिट करता है. Then you have turbine जिससे पानी हिट करता है and then you have generator connected to a turbine to produce electricity. The so this is a very basic schematic figure showing some common features of the hydropower installation. This is another figure which is a bit descriptive for the Niagara waterfall. It has different penstock and in reservoir, spillway and original riverbed, powerhouse, and you have trail section. So this is a schematic. A better schematic can be found on internet to actually have a look the detailed components of the Niagara Fall power plant. So important thing is that current world hydropower production is almost 2000 terawatt hour per year. This is a huge number. तकरीबन 20% जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस होती है इसमें से तकरीबन 635,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है 150 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। सिर्फ यूएस के अंदर तक ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी है वो 100,000 मेगावाट की है जिसमें 75 78 जो मेगा 78,000 मेगावाट जो है वो हाइड्रो से और 25 जो है वो पंप स्टोरेज से होती है। अबाउट 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इक्विवेलेंट टू 3.1 क्वाट्स अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो अमूमन हाइड्रो पावर को हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी फॉल करते हैं या कंसिडर किया जाता है तो यूएस की तमाम टोटल एनर्जी में जो रिन्यूएबल का जो शेयर है उसकी 50% जो है वो सिर्फ हाइड्रो देता है और इसकी जो एवरेज कैपेसिटी अवेलेबिलिटी फैक्टर है वो 42% है यूएस के अंदर। एक और बात के सम कॉम्पैक्ट्स एंड फिगर्स पावर कैपेसिटी जो है 1 किलोवाट से 17,000 मेगावाट तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा साइज है। हाइड्रोलिक हेड फ्रॉम लो हेड वेरी लो हेड लेस देन 1 मीटर टू हाई हेड विच इज 1500 मीटर्स विच मीन अगर आपके पास छोटा रन ऑफ सिस्टम्स हैं तो आपके पास 1 मीटर हेड पर भी बिजली पैदा हो सकती है लाइक लेट से छोटे आपके दरिया बह रहे हैं या नहरें बह रही हैं और साथ साथ 1500 मीटर्स हेड पर भी दैट इज अ वेरी हाई हेड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लार्जेस्ट डैम जो है पर ताजिकिस्तान में दैट इज 300 मीटर्स। लार्जेस्ट री इन्फोर्स कॉन्क्रीट डैम्स जो है वो स्विट्जरलैंड में है एंड रिजर्वायर जो है सबसे बड़ा युगांडा में है। एंड दीज आर ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग डिफरेंट हाइड्रो पावर सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड। theoretical potential जो है वो आपके पास टेक्निकली एक्सप्लॉइटेबल दैट इज वेरी हाई ऑलमोस्ट 64 मिलियन मेगावाट
जो है वो टोटल वर्ल्ड पोटेंशियल है, अगर आप उसको सही से एक्सप्लॉइट करते हैं। द लार्जेस्ट पावर प्लांट जनरेशन आर हाइड्रो। यूजली जो सबसे बड़े पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल पर रन नहीं होते, बल्कि वो अमूमन कन्वेंशनल हाइड्रो प्लांट्स होते हैं। स्विट्ज़रलैंड में, नॉर्वे, कनाडा, चाइना, आइसलैंड एंड अदर कंट्रीज। पाकिस्तान में जैसे टर्बिला डैम सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान का, जो कि एक बहुत बड़ा चंक देता है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और ग्रिड को। These are some of the famous hydropower projects. Mega scale projects हैं जिसमें capacities लिखी हुई हैं. For example, this one is in US Washington, which is 6,500 megawatt. This is Niagara Fall has 1950 megawatts. So that is a very big number. We have Brazilian power plant, which is almost 12,600 megawatt. We have a Chinese impoundment tank, which is the largest tank right now, 17,000 megawatt. That's a very big number. You can imagine that पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट होती है पीक गर्मियों में, वो तकरीबन 22 से 23 हज़ार मेगावाट होती है पूरे मुल्क की। और चाइना का सिर्फ एक डैम है वो 17,000 प्रोवाइड कर रहा है। तो यू कैन इमेजिन के क्या स्केल है इनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। और ये जो 17,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान में, ये टोटल रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में, बल्कि इससे भी कम हो जाती है, तकरीबन 15-16 हज़ार मेगावाट हो जाती है। तो इवन अ सिंगल डैम कैन फुलफिल पाकिस्तान डिमांड, नेशनल डिमांड, राइट? So you can imagine remarkable power generation benefit 26 पाकिस्तान का जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है, चाइना 3 गॉर्जियस प्रोजेक्ट, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट जिसका हमने अभी जिक्र किया था। 26 टर्बाइन जनरेटर ये मौजूद हैं, ईच विद इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 700 मेगावाट्स प्लस 6 मोर 500 मेगावाट यूनिट इन द राइट बैंक अंडरग्राउंड पावर कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी जो है 18,000 मेगावाट है। एवरेज पावर जनरेशन जो है वो तकरीबन 84.7 terawatt hour है, biggest one in the world, this is the largest, and maximum transmission range जो है 1,000 किलोमीटर तक इसकी ट्रांसमिशन है। You can see from this figure that the size of the turbine is immense. This is a hydraulic turbine, and you can imagine how big this turbine is, that is capable of producing 700 megawatt with a single turbine. There are some other pro projects which are compared to the China. These are all facts and figures which are provided to you, so I'm not getting into a detail of these facts and figures. Hydropower is strategically important worldwide. सबसे बहुत important बात है because usually ममालिक दुनिया के जो मुल्क हैं उनकी maximum जो electricity production होती है वो हाइड्रो से होती है। For example, नॉर्थ कोरिया जो है वो 569 टेरावाट आवर पर ईयर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड Asia is quite high as well, because mostly the Chinese power plant are producing the major chunk of this number. Uh, there are almost 5,000 plants in North America, and internationally there are 42,000 units. Total world जो है that is actually have creating 2,150 terawatt hour per year बिजली या electricity produce कर रही है, and that is the cost or the dollar figure associated with this number of this much of energy. This is another stats of 99. That's a quite old number. Billion kilowatts are produced. The largest is Canada, and as you go downwards, because maybe Canada is producing maximum of the percentage of the electricity from dams, right? Of the water. Maximum Canada produce कर रहा है अपनी total electricity. उसके बाद United States, Brazil, China. These are old number. Maybe now the China has taken over all these countries. Uh, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस ग्राफ में कि यहाँ पे पास जो डेवलप ममालिक हैं वो उनके यहाँ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट जो है वो किस तरह की है। नॉर्वे की सबसे इंटरेस्टिंग फिगर है कि नॉर्वे जो है वो अपनी ऑलमोस्ट 100%, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 100%, बट 99%, 98% जो है वो पावर प्रोडक्शन जो है वो हाइड्रो से करता है। एंड देन यू हैव United States at the bottom of this chart of these developed nations, selected nations, and you can have a figure of a lot of numbers, a lot of countries. You can have a figure of like hydro percentage of most of the countries and from the different stats. तो पाकिस्तान की भी निकाल सकते हैं आप, इंडिया की भी निकाल सकते हैं, एंड चाइना की तो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है।
This is another same graph which you can see that how much North America, South America, and Africa, Europe, and Asia are producing from and like, producing from hydropower. There are the maximum theoretical potential and technically possible, and then you have economically possible. So these are all different numbers. Maximum theoretical potential is basically जो कि अवेलेबल है, टेक्निकली पॉसिबल जो कि आप पॉसिबल आप डिज़ाइन के हिसाब से पॉसिबल हो सकता है, बट देन यू हैव अ इकोनॉमिकली पॉसिबल विच इज़ less than 15 greater than one 1500 terawatt hour per year. So usually we go with this number because if something is technically possible it may not be economically possible. And theoretical potential is the number which जिससे आप तमाम टोटल निकाल सकते हैं कि कितनी पावर जो है वो अवेलेबल है इन फ्रॉम द वाटर सोर्सेस. बेसिक ऑपरेटिंग इक्वेशन जो है वो हाइड्रो पावर की बहुत बेसिक है. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फ्लूइड मैकेनिक्स. टोटल पावर फ्रॉम हाइड्रो इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक कंट्रीब्यूशन. टोटल हाइड्रोलिक हेड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू एफिशिएंसी. तो हमारे पास टोटल हाइड्रोलिक हेड जो है वो रो जी जेड प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होता है. जी जेड जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है और हाफ रो जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, डायनामिक इफेक्ट है. क्यू जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट है, एप्सिलॉन जो है वो एफिशिएंसी है. फॉर एम्पावरमेंट हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम विद ओनली स्टैटिक हेड जो होता है आपके पास, तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट दैम इनटू दिस इज 9 पॉइंट गामा टाइम जेड विच इज द हाइट एंड क्यू is the flow rate and epsilon is the efficiency. So this is a pretty basic formula to find the power available power of a hydroelectric turbine. हाइड्रो पावर एनर्जी कन्वर्जन कॉन्सेप्ट. हाई हाइट जो है वो ग्रेटर देन 200 मीटर्स होते हैं. यूजुअली वी यूज पेल्टन इम्पल्स टर्बाइन. लो हाइट जो है वो 6 to 300 मीटर्स. वी यूजुअली यूज फ्रांसिस एंड कपलान रिएक्शन टर्बाइन. Ultra low height is less than 6 meter. We have reaction turbine. These are usually installed at the river banks और नहरों नदी नालों में आप इनको इंस्टॉल करते हैं. टिपिकल एफिशिएंसी जो है वो 80 to 85% है. Can be integrated into pump system and storage system. Conversion technology for low head similar to a tidal power system. तो usually जो low head plants होते हैं वो इस तरह tidal plant power plant system होते हैं जिसमें आपके पास वो टर्बाइन इंस्टॉल की जाती हैं जो कि low head के ऊपर काम कर सकती हों. These are some basic of Kaplan and Francis turbine. These are all theory. These are some different parts of Francis turbine, Kaplan turbine, and they have different application depending upon the head of the water. Uh, Hydropower, environmental and social issues. This is a very important thing because usually we consider hydropower to be a clean source of energy, but there is a debate that hydropower is not a clean and it has some environmental impact as well. And the social impact, the social cost of these power plants are quite high as well. Uh, so usually आपके पास the problems are food, water, energy. We have environmental damages, competition of natural resources, population, and geopolitical stresses. So there is a triangle of conflict, which is a really complex thing to address. And in this course, we have been discussing all these concepts in detail. So usually the hydropower जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं. Sustainable management of hydro resources. पहली बात requires careful consideration of its multiple uses. पहली बात है electricity. You can produce electricity from it. वी हैव पोर्टेबल वाटर सप्लाई जो आसपास है. आपने पानी को ज़ख़ीरा किया, पानी को स्टोर किया, तो आप उससे पानी जो है वो फॉर द यूज़ फॉर योर डोमेस्टिक यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. फ्लड कंट्रोल, जहाँ पे आपके यहाँ सैलाब आ रहा है आप पानी को रोक के फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं और पानी को जो है पानी के बहाव को रोक सकते हैं. जब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए जस्ट टू अवॉइड द फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इरिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज व्हेन यू स्टोर वाटर तो आप उससे फिर चैनल्स और कैनाल्स के ज़रिए खेतों में पानी या बाकी ज़रूरी ज़मीन पानी दे सकते हैं. क्योंकि जो अगर आप पानी जो है वो डैम नहीं होगा तो पानी सारा पानी बह जाता है और वो समंदर में चला जाता है. Recreation से मुराद के पर you have big lakes where you can have recreational activities like boating and fishing and other stuff. So these are some of the benefits of the hydropower systems. अच्छा, there are some interesting fact. 19% of global electricity basically comes from power hydropower. 30 to 40% ऑफ ग्लोबल इरिगेशन ज़राअत जो है वो 30 to 40% जो है वो हाइड्रो पावर जो लेक्स होती हैं, हाइड्रो पावर जो आपके पास रिजर्वायर्स होते हैं उनसे उनकी वजह से होती हैं. एक और सबसे नेगेटिव बात ये है कि आप तकरीबन
40 to 80 मिलियन, तकरीबन 4 से 8-10 करोड़ लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। बिकॉज जब आप डैम बनाते हैं तो वी हैव टू, आपको ज़मीन खोदनी पड़ती है, और उसके साथ साथ जो है आपके पास बहुत सारे जो गांव देहात हैं उसके आसपास वो उनको मूव करना पड़ता है। वाटर लॉस थ्रू एवोपरेशन फ्रॉम रिजर्वायर एक्सीड एनुअल ग्लोबल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बिकॉज जब आपके पास एक लेक होगी, बहुत बड़ा रिजर्वायर होगा, तो आपके पास वहाँ से एवोपरेशन होगी, एंड यू कैन नॉट एक्चुअली कंट्रोल द एवोपरेशन सिंस इट्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर। जो पानी का लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, एंड दैट लॉस इज एक्चुअली मोर देन द टोटल डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। GHG from biomass disintegration, tropical reservoir, substantial and T&D infrastructure needs, as for example, Hydrocubic produce 35,000 megawatts and needs about 33,000 kilometer of transmission, and 109 109,000 kilometer of distribution line to deliver it. So need, there are different challenges as well. You need you need a long, very long transmission lines and distribution lines. Uh, जी सम बस रूरल सरफेस वाटर जो अवेलेबल है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस वाटर अवेलेबल जो है वो 86,000 86,100 किलोमीटर क्यूब पर एकड़ एरिया है। तो जितना आपके पास यूटिलाइज है और नॉट यूटिलाइज जो विड्रॉ किया हुआ है, डोमेस्टिक यूज़ हम 5% है, इंडस्ट्रीज 25%, मैक्सिमम चंक जाता है एग्रीकल्चर के अंदर। मतलब ग्राउंड वाटर है वो वाटर है जो कि आपके पास ज़मीन के अंदर होता है, और सरफेस वाटर वो जो आपके पास ज़मीन के ऊपर जो कि झील या दरिया वगैरह की सूरत में नज़र आता है। These are some of the facts of regarding the global water resources. लैंड यूज, जब आप सोशल इश्यूज क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, व्हेन यू इनंडेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, आपको ज़मीन को मूव करना पड़ता है, आपको खुदाई करनी पड़ती है, और लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल हाइड्रोलॉजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप जब ज़मीन को पानी जमा करते हैं तो पानी का जो ऑपरेटिव रेट है वो बढ़ जाता है, जिसकी और ऑल्टरिंग रिवर फ्लो, जब आप रिवर के फ्लो को ऑल्टर करते हैं तो नेचुरल फ्लडिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती है। सेडिमेंटेशन में बात ये होती है कि आपके पास जो डैम है उसमें जब पानी जमा होता है तो वो नीचे ज़मीन में जो रेत है या मिट्टी वो बैठती रहती है, जिसकी वजह से नीचे जो है वो जो बॉटम जो उसका बैंक है या जो झील बनी है वहाँ पे नीचे मिट्टी जमा होती रहती है। बायोडाइवर्सिटी को बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। किसी इलाके में अगर आप वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है दैट कंसिस्ट ऑफ द एक्वाटिक लाइफ, जो मछलियाँ हैं, प्लांट्स हैं, मैमल्स हैं, तो वहाँ से ज़मीन डिस्प्लेस करने पे या पानी के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब करने से उनकी उनकी जो लाइफ है उसको थ्रेटनिंग होती है। वाटर केमिस्ट्री बदल जाती है। यू हैव मर्करी, नाइट्रेट, ऑक्सीजन में भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, दैट कैन एक्चुअली कॉज सम सीरियस डैमेज टू द इकोलॉजी of the of the area. Seismic risk होते हैं, आपके पास जल्जलों के रिस्क होते हैं, because when you are moving earth to a massive scale, on a massive scale, तो आपके पास उन एरियाज में जो सेस्मिक रिस्क प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज फेलियर रिस्क होता है, अगर आपने डैम बना दिया, पानी जमा कर लिया, तो अगर खुदा ना खास्ता डैम में फेलियर होता है तो दैट वुड बी डिजास्टर्स फॉर ऑल द एरियाज अराउंड द डैम। These are some basic. These are facts we are not discussing right now. Environmental and social issue हम discuss करते हैं. These are some interesting things to discuss if you wanna read them. These are just self-explanatory slides. This is a Colorado River, which is a huge dam. Um, this is some positive and negative effects of the hydropower. Positive is emission free है hydropower, आप इस particulate नहीं होते। Negative क्या है, frequently involve impoundment of large amount of water with loss of habitat due to the land indentation। पानी जमा करना पड़ता है आपको बहुत सारा, जिसकी वजह से ज़मीन को आपको मूव करना पड़ता है, और वहाँ पे जो हैबिटेट है या जो वहाँ पे माहौल है उसको नुकसान पहुँचता है। रिन्यूएबल सोर्स है, हाई कन्वर्जन एफिशिएंसी, 80% एफिशिएंसी है, और रिन्यूएबल सोर्स है। वेरिएबल आउटपुट डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड स्नोफॉल, एक बहुत बड़ा नेगेटिव बात है कि इट डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल एंड स्नोफॉल। डिस्पैचेबल विद स्टोरेज कैपेसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिस्पैचेबल, और यू कैन स्टोर द इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। इम्पैक्ट ऑन रिवर फ्लोज एंड एक्वाटिक इकोलॉजी इंक्लूडिंग फिश माइग्रेशन एंड ऑक्सीजन डिप्लीशन, ये एक मसला है इसके साथ। यूजेबल फॉर बेस लोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यू कैन यूज द हाइड्रो पावर सिस्टम फॉर बेस लोड, यू कैन एक्चुअली प्रोवाइड द मैक्सिमम ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फ्रॉम द हाइड्रो पावर।
सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज वी यूजली डिस्प्लेस पीपल फ्रॉम द एरिया, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उनको उनकी ज़िंदगी पर बड़ा नेगेटिव, उनकी ज़िंदगी में सोशली बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। स्केलेबल है, इट भी बहुत छोटा पावर प्लांट 10 किलोवाट्स टू 100,000 10,000 किलो मेगावाट्स तक भी आप बना सकते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट है इसका डेवलपिंग कंट्रीज में बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ अ वेरी हाई कार्बन फुटप्रिंट। मेंटेनेंस इसकी आसान है और ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी लो है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विद दीज हाइड्रो पावर्स, कि आपकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जस्ट लाइक अभी हम जो बात कर रहे हैं डैम ही भाषा डैम की, या तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट है दैट्स वेरी हाई। लॉन्ग लाइफ टाइम है यूजुअली 50 ईयर्स, बट उनका बहुत अरसे से चलते हैं। पावर प्लांट जो है उनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, मगर एक नुकसान ये है कि इनका जो लीड टाइम है बहुत ज़्यादा है। इनिशियली यू नीड अ लॉट ऑफ ईयर्स, लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली बिल्ड दैम। हाइड्रो पावर इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं? वेरी कैपिटल इंटेंसिव, यूजुअली हैव बहुत ज़्यादा आपको पैसा चाहिए इनिशियली। इवन फ्यूल कॉस्ट भी बहुत होती है इनिशियली बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ा एक आप ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे व्हीकल इन्वॉल्व हैं। लार्ज प्रोजेक्ट ग्रेटर देन 100 मेगावाट हैव लॉन्ग लीड टाइम, तकरीबन 4 से 6 साल लगते हैं अगर आपको एक 100 मेगावाट का ही बना रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग नंबर। लॉन्ग लाइफ टाइम, लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एक पॉजिटिव बात है, हम बात डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज सीजनल वेरिएशन की वजह से उसमें फ्लो में चेंज आ सकता है। कॉस्ट ऑफ वेरी सेंसिटिव नेचुरल टेरेन एंड क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल अगर नेचुरल टेरेन आपका डिफिकल्ट है और आपका क्लाइमेट जो है वहाँ खत्म मुश्किल, वहाँ पे हार्श है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है। इंस्टॉल्ड कॉस्ट रेंज फ्रॉम 75 $750 per kilowatt to 2000 kilowatt for the 10 to 100 1000 मेगावाट प्लांट। तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो कॉस्ट है पर किलोवाट आवर, वो पर किलोवाट कितनी पड़ रही है, कि आपकी वो लोकेशन क्या है और उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या पड़ रही है। इंट्रेंसिक आउटपुट ड्यूरेबिलिटी नीड्स टू इन्फ्लेट कॉस्ट टिपिकली रेंज फ्रॉम कुछ चीज़ें मतलब कुछ ऐसी इंट्रेंसिक आउटपुट्स होते हैं जिनको हम, कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जिनको आपने इंक्लूड करके हम कॉस्ट जो है उसकी बढ़ जाती है। Hydropower is at risk in US at average 8% production losses due to relicensing regulatory pressures. एक और मसला है कि अगर those who are private bodies constructing hydropower, because पाकिस्तान में तो hydropower private companies नहीं बना सकती, but usually in US or in other developed countries you need licensing टू बिल्ड अ पावर प्लांट। तो अगर उनकी रेगुलेटरी इश्यूज हैं या लाइसेंस जो है वो नहीं बन पा, जिसकी वजह से नए पावर प्लांट नहीं बन रहे। लॉस हाइड्रो पावर कैपेसिटी इज बीइंग रिप्लेस बाय फॉसिल फ्यूल, तो जो आपके पास जो नहीं बन पा रहे पावर प्लांट, तो उनको फिर कंपनसेट किया जा रहा है बाय फॉसिल फ्यूल फायर पावर प्लांट से। एक और बात जो मसला है कि नॉन एग्जिस्टेंट फेडरल और प्राइवेट R&D टेक्नोलॉजी रिसर्च जो है वो कम हो रही है इस एरिया में। These are some effects of relicensing in hydro plants. Relicenses with losses and relicenses with gains. Uh, these are the R&D needs right now. Fish patches require robust technology solution. जो मछलियां हैं उनके लिए एक मसला होता है बिकॉज जब आप पानी का फ्लो डिस्टर्ब करते हैं तो मछलियां जो है वो ट्रैप हो जाती हैं, मछलियों की लाइफ पर नेगेटिव असर पड़ता है। तो ये एक बहुत हॉट R&D टॉपिक है। क्वांटिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन स्ट्रीम फ्लो नीड्स, जो इन स्ट्रीम फ्लो जो है उसके साथ अटैच हो रहे हैं, इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उसकी पूरी हाइड्रोडायनामिक्स जो है वो ज़रूरी होती है। वेरिएबल स्पीड टर्बाइंस में बहुत काम हो सकता है एज एन R&D इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मल्टीपल वाटर यूजेज, ऑपरेशनल इफेक्ट रिजर्वायर इकोलॉजी, ये यूजुअली सिविल इंजीनियर्स या आपके जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स होते हैं उनका काम होता है। Improved numerical model for turbine systems and hydraulics. So these are some of the R&D needs right now for the hydropower systems. This graph shows the budget of R&D budget of renewable sources from 1983 to 1992, and you can see that the highest budget is of solar, and whereas the hydropower budget is very minimal as compared to the other sources. This is talking. We are talking about the only the renewable sources: solar, geo, wind, and hydropower. लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी फॉर हाइड्रो पावर, कैप्चर द लो हेड रन ऑफ रिवर। यूजुअली अगर आपको बड़े प्लांट नहीं बनाए तो आप छोटे रन ऑफ रिवर प्लांट जो है वो बना लें।
जो जो यूजुअली जिस विद में जो सस्टेनेबल भी होते हैं और आपको इतनी कॉस्ट नहीं लगती और यूजुअली जल्दी बन जाता है। फिश फ्रेंडली टरबाइन लगाएं, मिनिमल वाटर इम्पाउंडमेंट, पानी को कम से कम जमा किया जाए और ताकि जो बहाव है पानी का दरिया या रिवर का उसी के ज़रिए टरबाइन को रन किया जाए। मिनिमल इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, ये एक्वेटिक इकोलॉजी, जब पानी जमा नहीं कर रहे, आप ज़मीन को नहीं मूव कर रहे, तो आपके पास जो आबी हयात है उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी उस पर जो है वो बहुत कम असर पड़ता है। और जो सेडिमेंट्स हैं वो नहीं बनते। सेडिमेंट मतलब कि नीचे मिट्टी बैठती नहीं है, बिकॉज पानी मुस्तकिल बहता रहता है। These are some they are fish friendly high speed hydro turbine research by Arlen Research Laboratory. So you can have different design for hydraulic turbine which actually allows the fish to travel through them without being harmed. Low head power system है environmental advantages. Minimum land indentation होती है, ये एक तस्वीर बनी हुई है, अगर आप, you can actually see this. We have a turbine here and we have a small river stream. The water flows through it and it produces some amount of electricity. Although the amount the amount of electricity will be not as much as in the empowerment system, but definitely it can actually provide electricity to a localized place, right? तो मिनिमल लैंड इंडेंटेशन होती है, मिनिमल चेंज ऑफ हाइड्रोलॉजी होती है, फिश माइग्रेशन और पैसेज को मदद मिलती है, डिस्पैचेबल पावर है और स्मॉल स्केल एंड मॉड्यूलर है, आपने उठाया कहीं भी फिट कर दिया। और जो इलाके जो मेन ग्रिड से कटे हुए हैं तो वहाँ पर भी ये छोटी छोटी टर्बाइंस या छोटे हाइड्रो पावर लग सकते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अगर यू कैन सी इन द नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान वेयर यू हैव हाई करंट्स बट यू डू नॉट हैव मच हेड्स, so you can install these type of turbine, small hydropower plant turbine, to provide electricity and power to the nearby villages. So this is it about, this is it as far as the hydropower is concerned. So this gives you an idea that what are the challenges of hydropower and what is the need of the time. Thank you very much.